Good morning, everyone. Good morning, and welcome to the Daily Transform series. And I'm Dr. Sumer. I have with me Dr. Deepthi, and we connect to you every day in the morning at 10 a.m. on our YouTube channel as well as on the DAMS Alpha app. Yes, a very good morning to everybody. Good morning, Bachar. And today, what we're going to talk about is something which is very personal, something which is very important, and something which needs to be talked about. So, my first question is, how many of you are, every now and then you have a feeling ke give up karte hain? Every now and then you have a feeling that I give up, and you get tired, or you want to छोड़ते हैं यार ये नहीं हो पा रहा. And today I want to share with you a very small story which should give you an idea that what is life really about. There was a group of frogs. It's very interesting, and I wanted to talk to you. There was a group of frogs who were going and walking in the forest, and out of them, two of them fell in a well. Two of them fell in a well, and immediately all other frogs, they start to shout कि अब तो नहीं निकल पाएंगे, अब तो नहीं बच पाएंगे, and the well is too deep and you will not be able to come out. Both of them, they started to jump and try to get out of the well. One gave up and died in the well. The other frog continued fighting and came out of the well. When he came out of the well, all other frogs asked him why you were able to make it, and he did not answer. Can you tell me why he did not answer? Can you tell me why he did not answer? Because he was deaf. He was deaf, and that is the key. When you are in the well, when you are in the bottom, if you stop hearing to what people are saying, if you stop hearing to negativity, you will be able to come out of the well. लेकिन लोग अगर तो एक जैसी मतलब, and try to understand, this is something that I told in my last class also, that when we are winning, you don't hear people because you are so busy winning. When you are at the rock bottom, the noises amplify, you are already in the well. अपने को पता है कि मैं थक रहा हूँ, मैं वेल के अंदर हूँ, और लोग का शोर सुन रहे हैं, हम डर रहे हैं. But if at that time you need to be deaf, you need to stop hearing people. सबके सुनता रहेगा तो नहीं वापस आ पाएगा, नहीं जीत पाएगा, I guarantee you. But लेकिन अपनी सुनेगा ना तो जीतेगा. So that's a very beautiful story, and it always gives me motivation that whenever I am down, I think I'm a deaf frog. And what I want to add, also nobody is perfect. Do you realize this? Even that frog who could survive the toughest phase of his life was not perfect. He was not made perfect by God or whatever, right? And he had flaws. Yes. And the thing is, nobody is perfect, and you don't need to be perfect to win in life, right? That is not required. What is required is the intent. What is required is the desire, right? What is required is this immense faith in your own self. That is the only thing that is required. Yes. And so the entire idea is that, when we are winning the game, there are no noises, no one seems to notice. And you are also in your own, zone. You're winning, nothing seems to matter. But when you lose, and today I'm here to tell you that ऐसा होगा नहीं कि हमेशा हम ही जीतेंगे. You will have your own shares of wins and losses. ऐसा होना ही पड़ेगा. ऐसा मतलब हमेशा ना मैं जीतूंगा ना आप हारेंगे, ऐसा हो नहीं सकता. So when you lose for the first time, and this is what I see many medical students, having this. School से जीतते आ रहे थे, school में top करते आ रहे थे. Suddenly you face your first defeat, and you are totally devastated because nobody talked about it so far. At that time, you have to stop hearing the voices of the people. Absolutely, yes. And every time you are reminded of your flaws, which everybody will have, okay, and it's absolutely okay to have flaws because that's what makes us human. Yes, otherwise हम एक sculpture होते जो बहुत सुंदर होता जिसमें कोई भी flaws नहीं होते मगर उसमें life भी नहीं होती, right? So please understand that you need, whenever you're reminded of your flaws, tell yourself that you are bigger than that and you have many more things to your advantage. You could use so many other pluses that you could have which probably others don't have. So when
everyone else is realizing or making you realize of your flaws, you need to tell yourself about your strengths. You need to constantly remind yourself of the strengths you have. And that is what is going to pull you out in whatever phase of life it is. It may be academic, it may be non academic, it may be something related to your personal life, whatever it is. But that's what keeps us going in life, right? So the first story I told you in the beginning was, I think some of you could not hear, was that there was a group of frogs walking down the forest. Two of them fell into a well, and the other frogs, they started to shout कि अब तो ये नहीं बचेंगे, अब तो नहीं बच पाएंगे, ये बाहर नहीं आ पाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा. They both of them, they tried to come out. One died, but one persisted and came out. When he came out, all other frogs asked him, "कि boss, तू कैसे बच गया? तू Yeah, कैसे? How did you do it? How did you do it?" He did not yeah. answer. Can you tell me why? Because he was deaf, and that is the key. You need to be deaf to the noise of the world. And the second story I wanted to share with you is, me and Orditi, we went to Edinburgh once, and we happened to see the house of J.K. Rowling, the first house of J.K. Rowling, the woman behind the famous Harry Potter series. And our first house was a very small one-bedroom room with full of Her daughter. bats and infested, and she was from a very poor background. And Yes, and that tells you that, and she faced multiple rejections. Her and first book many was people, they told us was that there was rejected for one. the 10 times it was rejected. Yes, there was just one cafe we used to. She used to have a morning coffee and one loaf of bread. That's it. That's what And that was so for can her you imagine? meal. So, when you're coming from that kind of background and you're rejected for the first time, you would say कि boss मेरे लिए नहीं बना ये सब, मैं कुछ और करता हूँ. She had a typewriter, kept typing. Philosopher's Stone was rejected 10 times by people. Ultimately, now she's one of the richest people on the planet, most celebrated author. You can do it also, but you need to be deaf to the noise. ये अपने आप की नॉइज को भी डेफ करना पड़ेगा. अपने अंदर भी जो आवाज है ना कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बेवकूफ हूँ, मैं तो प्राइवेट कॉलेज से हूँ, मैं पेरिफेरल कॉलेज से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, हटा यार सब कुछ, कहीं से नहीं है तू. तू जीतने के लिए बना है. यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि ये बार बार की नॉइज एक बाहर से आ रही है, एक अंदर से आ रही है. एंड यू हैव टू बी डेफ टू बोथ. यू नो समय उतना नहीं है कि हम सबकी बातें ही सुनते रह जाएंगे, फिर बातों बातों में कहानी खत्म हो जाएगी ना. इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ अ स्टोरी, तू चाहता है कि तेरी कहानी, तेरी लेगेसी बने, तो ये बंद करनी पड़ेगी बातें, रोकना पड़ेगा. लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ माय टॉक टुडे, यू हैव टू बी डेफ टू द ऑडियंस. छोड़ दुनिया की बात, अपनी करते हैं करके दिखाते हैं. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो. Will you now make it happen? Write it now. I will make it happen. बोलोगे? I'm sure they will. They will make it happen. That's what has brought them this far. They don't know this, but they have this immense ability to persist, and that is why they are able to reach this far in their life. And I'm sure they have come this far not to quit. Okay, they have come this far, Sumay, to make it really big for themselves, not for anyone else, right? So they are here to do it big for themselves. Yeah. तो अगर जीतना है ना, तो रोकना पड़ेगा इन आवाज़ों को. ये आवाज़ें बाहर से लग रही हैं, है नहीं बाहर से, हैं हमारे अंदर की. हम सबको डर लगता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी शायद बाकी लोग बहुत ही अच्छे होंगे. आई मेट अ स्टूडेंट यस्टरडे, वो कह रही कि सर मुझे लग रहा है बाकी लोग बहुत होशियार है. मैंने कहा तू उनसे भी ज़्यादा होशियार है. कह रहे सर मुझे नहीं लग रहा. मैंने कहा पता चलेगा. लेट्स कीप वर्किंग ऑन इट ना. हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटीज हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, दे ऑल मेक अस फील लाइक एन इम्पोस्टर. हमें लगता है शायद मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता. हमें लगता है शायद कोई और आके मेरे को सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो यहाँ बिलोंग नहीं करता. यू बिलोंग टू द टेबल. तुम यहाँ आए हो, यू बिलोंग टू द टेबल. एक और बच्चे का मुझे मैसेज आया, कहता है कि सर मुझे लगता है कि शायद मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए था, मैं उतना होशियार नहीं हूँ, है ना. एंड फिर मैंने उससे बोला यार, तूने नहीं डिसाइड किया कि तुझे डॉक्टर बनना है. देयर इज समवन मोर पावरफुल देन ऑल ऑफ अस. उसकी जो पावर है, उसने सोचा ना कि तू डॉक्टर बनेगा. यू बिकम, तेरा एमबीबीएस इसलिए नहीं हुआ कि तूने किया, इसलिए हुआ कि एक बड़ा प्लान है जिसने हम सबको अपनी जगह पहुंचाया है. तू यहीं बिलोंग करता है. अब ये छोड़ना, बोलना छोड़ दे कि मैं इम्पोस्टर हूँ, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. Start utilizing the opportunity that you have.
You belong to the table and you are not going anywhere till the time you win. ठीक है ना? अभी ये टेबल पे तो बिलोंग करता है. बहुत सारे लोग ना ये गलती करते हैं. वो मेडिकल कॉलेज में आके और मेडिकल प्रोफेशन में आके उन्हें लगता है शायद ये बहुत मुश्किल चीज है और बाकी लोग बहुत होशियार हैं, मैं नहीं हूँ, शायद मैं ना जीत पाऊंगा, एंड दे रिमूव देमसेल्व्स फ्रॉम द पिक्चर. तुम जीत पाओगे. नो मोर इम्पोस्टर सिंड्रोम. नो मोर सेइंग कि आई डोंट बिलोंग टू द टेबल. तू है. और आप और मैं कौन होते हैं ये कहने वाला कि यू डोंट बिलोंग टू द टेबल? बिकॉज आपसे भी हम सबसे बड़ा कोई और है, उसने पहुंचा है ना यहाँ पे. तो अब आगे की सोचते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद ऑप्टिमिज्म. Like on that note, I would definitely want to say that only the thought process is not going to make you win, right? The thought process is essential. The strength is essential. But then, जैसे डॉक्टर सुमेर ने पहले भी कहा है, action is even more important. We have to convert our thoughts into actions. ठीक है? और जब हम वो नहीं करते हैं, then there is a gap. Gap in what we want in life and what we are getting. ठीक है? वो इसलिए गैप अब समझो क्यों है. You want to do great, but the efforts are not as great as they have to be. So I feel I deserve this, I deserve that, but then I'm not putting the same amount of efforts that are required. Yes, so अब मेरी बात सुनो. बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम मैं पढ़ रहा हूँ पर मेरे नंबर ऑफ करेक्ट 140 से ऊपर नहीं जा रहे हैं. ठीक है? Then you need to introspect. If you are plateauing, there is कॉस्ट definitely का an क्वेरी है area. थोड़ी, आई थिंक कॉस्ट कॉस्ट ना बच्चे Yes, का. there is another one as well, right? So then you need to figure out what is the area that is pulling your score down. Okay, and believe me, खाली GT बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं GT ही देता रहूंगा तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा. सैडली वो नहीं बढ़ेगा, चाहे आप 100 GT दे दो. ठीक है? If it has reached a plateau, right? For someone that plateau could be 120, for someone it could be 130, for someone it could be 140, right? And then if you think that only giving the GT is going to improve your score, it won't, till you really find out, analyze what you lack. When you say 140, it means you're still in the cluster zone, right? Where a lot of students would be around those marks and probably at the same marks. So we need to push ourselves beyond that zone. And for that, you need to know in depth कि कौन सी ऐसी चीजें हैं which are pulling you down. I'm sure there are certain subjects जो आपने बहुत superficially करे हैं because someone has told you कि ये यहाँ से कर ले, इतना बहुत है, right? या इसमें तो बस यही आता है, prejudice, right? इससे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं पाता. So you need to do a in-depth analysis, okay? And figure out what are your areas of weakness, where your content is superficial, where the problem is recall, and where the problem is application of concepts. Okay? Once you identify your mistakes and divide it into 3 zones, right? Number 1, it's recall. So then we will focus on revisions, okay? And we have given you multiple ways to revise, right? And we are reinforcing that. If your problem is application, you need to sit with a teacher, you need to undergo live discussions, you need to work on your approach, you need to see how to attract keywords, how to put them together. But if your problem is content itself, which means it is superficially, it is not up to the mark, then you have to, बेटा कितना भी कोशिश कर लो, superficial material से आप एक level तक ही पहुंच सकते हो. So then in those areas, it is better to go back to your main notes or maybe your back to basic videos or notes and see कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आ रही थी, because when the options are very close, that's where the problem arises, right? I think, one of the things that I see works very well when you are looking at a GT mistakes is use your DAMS video solutions. Every time you make a mistake, you are open to suggestions. At that time, if you listen to the teacher, it will be a game changer. If you are, I think 2-3 students had this query कि मैं stuck हूँ, तो जो गलतियां हुई बेटा उसका वीडियो देखना है. You will see a प्लीज lot of एनालाइज information. करो, अपने You आप will पता be लगेगा. able to analyze also कि टीचर बोल रहे हैं यार ये तो रूटीन बात है और मैं गलत कर रहा हूँ. That means Yes. मेरा concept superficial है ना? And I am happy that many students are attending the live classes, or Deepti again has a DAMS app live class. So don't confuse app live with a face-to-face class. It is happening live on the DAMS app. Okay, and the most beautiful thing is it is a two-way interactive course.
And you know, a lot of people say, "Sir, DAMS के app में बाकी से अलग क्या?" We do live sessions on the app. So live teaching, Dr. Deepti is going to take today, and I'm happy that I'll be many there of at you 5 are p.m. able. 5 p.m. Don't miss out. Right. So, I'll take one more query. Nidha ने पूछा कि sir, my family and friends, everybody is supportive, but I am having a fear that I will not be able to live up to their expectation. And you don't need to actually. You don't need to. You need to live up to your own expectations. So when you change that focus, now you're trying to push the accountability of your life onto others' expectations. So ऐसा कोई सच में अगर मैं बताऊं तो कोई कोई किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. अब तुझे अपने लिए करना है. अपने लिए करना है तब ठीक हो जाएगा ना. फिर यू नो स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ इट. अपने लिए करना है क्यों डर रही है ना. और फैमिली का काम है सपोर्ट करना, है ना. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन. दे लव टू डू दैट फॉर यू. दैट इज व्हाई दे आर देयर फॉर यू. सो डोंट फील एनी प्रेशर. दे आर देयर डूइंग देयर जॉब. यू हैव टू डू देयर्स, योर ओन, है ना. सो अपने अपनी मेहनत करते चलो, एंड आई एम श्योर दैट sky is the limit. Once you realize that you're doing it for yourself, not really for your family. अभी ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो. But most of us, I have seen people, they turn pretty selfish. Okay, वो ऐसा बोलते हैं मगर बाद में really they're not standing there for their family. So be true to your words. Becoming a doctor, you पहले तो ये समझो कि आप अपने लिए कर रहे हो. एक मुझे बहुत सिंपल सी बात समझ में नहीं आती. If you cannot love your own self, right, how can you love anyone else? You have to have this immense love for your own self. You can't be using bad words for your own self, and then you will think of good of others. How is that going to happen, right? So start with yourself. Tell yourself that this is what I'm doing for myself, and when I get to a better level, I will be able to help others. Yes. For example, हम एक पोजीशन पे पहुंचते हैं, और हम उस पोजीशन पे या एक पोजीशन ऑफ पावर पे सब क्यों पहुंचना चाहते हैं, बताओ? क्योंकि आपको लगता है कि उस पोजीशन पे जाके आप बड़ा कुछ कर सकते हो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट, कि आप जब कुछ डिसीजंस लोगे तो वो एक जने को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, वो मल्टीपल लोगों को इम्पैक्ट करेंगे. एंड दैट इज व्हाई वी वांट टू रीच अ पोजीशन ऑफ पावर, अ पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट. ठीक, उससे पहले ना हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और वो ही एक स्टेप बाय स्टेप तरीका भी वही है. So you work on yourself, you become worthy of a bigger position, and then yes, you'll be able to work for your family, for your siblings, for even people who are not connected to you. ठीक है. So इसीलिए समझो बात, जब अपना हम नहीं सोच पाएंगे अच्छा, तो औरों का अच्छा कैसे करेंगे? ठीक. और So ना let's मैं make ना it एक forward. एक हमारे एक नर्सिंग के बच्चे भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि डैम्स का नर्सिंग का अलग विंग है, डेंटल अलग विंग है. नीट पीजी तो खैर हमारा इंडिया का सबसे बड़ा विंग है ही. तो आज मैं ना एक नर्सिंग के कोई बच्चों की क्वेरी भी लेना चाहता हूँ कि सर हम घर पे पढ़ रहे हैं, हम कैसे उसको ऑप्टिमाइज करें. Sometimes when you're studying at home, and I want this to be a general answer for everyone, when we are studying at home, sometimes we tend to get more comfortable. तो अब क्या होता है, सुबह उठे नहीं, अगर हम जॉब भी नहीं कर रहे होते, कई बार हम सुबह लेट उठे या तैयार नहीं हुए, नहाए नहीं, एंड यू आर लाइक बेड में पड़े पढ़ते रहेंगे, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी. आई वुड सजेस्ट जॉइन अ रीडिंग रूम और अ लाइब्रेरी नियर बाय. अपने घर के पास में कोई रीडिंग रूम, कोई लाइब्रेरी अपने आसपास देखें, जहां पे आप ना सुबह उठ के तैयार होके एक रिचुअल की तरह जाए, अपनी किताबें ले, पढ़ना शुरू करें, अपना ऐप ले, हेडफोन लगाएं, पढ़ना शुरू करें. Even if you're attending a DAMS live class on the app, you can actually do it with headphones sitting in a library. Now what will happen is, you have the same routine as anyone else, that you are getting up, getting ready, just like your parents going to the office. आप भी उठ के तैयार होके ऑफिस जा रहे हो, अपना पढ़ाई किए, पढ़े, ब्रेक लिए, बीच में लंच के लिए ब्रेक लिए, पढ़े पढ़े पढ़े, रात को वापस आए, and then you go back again. This creates the ritual of study. When you are at home, it becomes more random and it makes more negativity. Right. So let's not take things for granted, is what I would say. ठीक है. जहां तक भी हम जिंदगी में पहुंचे उसको भी फॉर ग्रांटेड ना लें. You have to realize that it is a constant effort, right? We all have to make constant efforts to improve. Nothing should be taken for granted. Whatever you have, you should be grateful for that.
and you have to realize that you deserve it. So similarly, when you want to go forward in life, don't take things for granted. Work hard so that you're able to tell yourself, I deserve it. Okay, I'm just not getting something because I'm supposed to get it. ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिंदगी में. ठीक? So you're not supposed to get anything. We have to deserve it. So उसके एंड लिए ऑल्सो ना, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर परिवार में कोई एक बच्चा होता है, कोई एक इंसान होता है जो उस परिवार की पूरी जनरेशन की तकदीर बदल देता है। अगर वो बनना चाहते हो, अगर वो चाहते हो वो जनरेशन का बदलाव लाना, अगर वो गेम चेंज करना चाहते हो, यू नीड टू पुश हार्डर, यू नीड टू वर्क हार्डर। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं किस्मत से जीतेंगे, किस्मत से नहीं जीत पाएंगे। लाइक मैडम सेड, अपने आप कुछ नहीं मिलेगा। वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू विन, वी नीड टू छीनना पड़ेगा, हमें छीनना पड़ेगा। एंड आई विल टेक अ क्वेरी, एक बच्ची का क्वेरी है सर, नॉर्सेट के लिए एक दिन में कितने एमसीक्यू करें। सो मेरा आप लोग को सजेशन है, जो भी बच्चा चाहे मेडिकल या नर्सिंग में किसी जगह पढ़ रहा है, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हैं, पहले हमें एमसीक्यू करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक में गए, आपने एमसीक्यू करना शुरू कर दिए। टारगेट करो शुरू में अपने आप को रोज 20 का, धीरे धीरे 25 ले जाओ, 30। Ideal number for any exam will be 50. If you're doing 50 every day, it is known fact that anybody who is doing 50 MCQs every day in the morning in 1 hour period will become more habitual of MCQs. उसके MCQ की आदत पड़ जाएगी और उसको MCQ के पैटर्न से डर नहीं लगेगा। So I think on that note, we are going to wish you a very, very bright day today. I'm going to give you your daily targets. So ensure that you are looking up your daily targets. And what about the INI-CT predictor? Is everyone doing it? Are you doing the predictor test? Yes or no? Yes? Let me know, everybody, because those tests are specially made for you to ensure that you are on track and you are preparing well. है ना? So जल्दी से मुझे बताओ, सब बच्चे predictor test दे रहे हैं? Okay. And सब बच्चे transform 10x mini test दे रहे हैं? Have you revised your mission INI-CT? Yes or no? So mission INI-CT, please एम्स कैप्सूल से पहले रिवाइज करके रखो. Yes, everybody. So mission INI-CT करेंगे. और INI PYQ का भाप. Have you all started seeing INI PYQs? They are in your DQB also, and they are also in the revision course as INI PYQ का भाप. Yes? Okay, everybody. Today we have microbiology INI-CT predictor test. Live discussion will happen at 6 p.m. on Dam's Daily YouTube channel. These tests are unlocked for everyone. So all you need to do is go to the test series and under the transform test, give the INI-CT predictor test, which is for microbiology. Yes? Chalo. So AIMS capsule is coming up. I just wanted to tell the students, AIMS capsule will be a 3-day revision for 3 or 4-day revision for INI-CT paper. It will be a quick, concise revision of all the subjects. We will emphasize on the keywords that you need to know for INI-CT. We have created a new pattern for it, and also it will be available to all our subscribers who have Deadly Combo, Back to Basics, App Live, App TND और Face to Face. इस सब के लिए वो अवेलेबल होगा. एंड आई ऑल्सो वांटेड यू टू नो, INI-CT CBT का रजिस्ट्रेशन डेट खत्म होने वाला है. प्लीज रजिस्टर ऑन द ऐप फॉर द INI-CT CBT because after the end date I am unable to register because I have to book the computer centers all over India for you. And I also want you to know that INI-CT PYT PDFs are almost done. I think सारे subjects के आ चुके हैं आपके ऊपर. almost, yes. I think only one is left. वो भी बहुत जल्दी in a So day or so. please use those PDFs. They are very important. और एक और बड़ी अनाउंसमेंट है कि आने वाले हफ्ते में हम डीवीटी की डेट्स भी अनाउंस करने वाले हैं. एक बच्चे का क्वेरी है, सर इस साल निशांत पूछ रहे हैं डीवीटी कब होगा. जरूर होगा, and we'll be coming up with the dates and the mechanisms very soon. And DVT is a this legacy, but please look out, because last year we had so many enrollments that the places seemed smaller. So this time we will have limited seats available for DVT in every center. You will need to book your seats ASAP. So we will come out with the dates and every other detail that we need for DVT. DVT is a legacy.
It will always be. It will always be the game changer. So, for us also, it's very special. And for everyone, each one of you students also, it is very special. Right? So, chalo, milte hain sham ko 5 baje, app live. Okay? एंड आई जस्ट वांट यू टू नो कि जब भी लगे ना कि दुनिया की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, सब कह रहे हैं कि तू नहीं जीत पाएगा, टर्न डेफ. दैट इज द की टू सक्सेस. टर्न डेफ. मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू विन इट. कोई भी हमेशा नहीं जीतता, कोई भी हमेशा नहीं हारता. इफ यू आर एट द रॉक बॉटम, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दिस टू शैल पास. आई विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड. Take care, everyone. Bye.